Getting in some more breaking news right now. Another development taking place with Disha Salian's father's lawyer has now sought crucial evidence from Malvani Police. In fact, this is a major legal move where they have formally demanded all case-related documents from the Malvani Police. The request basically raises serious concerns over procedural lapses, suppression of evidence, and an alleged cover-up in the high-profile case linked to Bollywood as well as political circles. Now, the documents, the legal documents that they've asked, despite legal mandatory provisions, Malvani Police so far has failed to submit a conclusion report of the inquiry to the additional chief metropolitan magistrate and provide it to the deceased's family. So let's also go across to Mr. Nilesh Oja. He is the lawyer of Disha Salian. Mr. Oja, thank you very much for speaking to Republic TV. Now, there has been another big development. You are now demanding that Malvani Police Station, which is basically the local police jurisdiction, in fact, they hand over the documents in this particular case. Help us understand, what exactly are you now demanding? As per law, they are bound to give every document, pin to plain. So, but in specific, in addition to all report, we have mentioned that कि आप हमको CCTV footage जो कह रहे थे, which was actually implanted, that then all photographs, all panchanamas, all postmortem reports, forensic reports, and all the summons issued, all the statement of witnesses. फिर उसके बाद में movement register of all the police during that 7th June to, I think it is 20 June, it is mentioned in the letters. So we also sought for that movement register of the police. Mr. Oja, station diary entry of the police station. Mr. Oja, are you also demanding, Mr. Oja, are you also demanding that all the officers connected to this particular case should also be questioned, which, as I understand, would also include the former Mumbai Police Commissioner, Mr. Parambir Singh? Parambir Singh is one of the accused. उनके खिलाफ में we are having sound proofs. He was involved in the cover-ups. He was co-conspirator in this case. तो हमारे पास में sound proofs है. If you require, next time I will give the detailed explanation of these proofs. You are saying that you have detailed evidence of the role of the former Mumbai Police Commissioner. Can you slightly elaborate? When you say there is a direct role of the Mumbai Police Commissioner, it's surprising because this is a case which was being handled by the Malvani Police Station. Why would the Mumbai Police Commissioner be so interested in this particular case? If the Mumbai Police Commissioner is actually involved, as you are alleging, then do you have any evidence? Because you are making a very serious charge, Mr. Oja. This is not the charge, this is fact. And what is the fact? One thing, I will explain one by one. Assistant Commissioner of Police A.P. Nipunje acted like a whistleblower. उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन किया और उस स्टिंग ऑपरेशन में वीडियो रिकॉर्डिंग है, वो रिपब्लिक भारत को दिया है उन्होंने पेन ड्राइव में, विच शोज दैट उनका क्या कहना है कि दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत का जो मर्डर केस था उसको मनसुख हिरेन की तरह सुसाइड या फिर एक्सीडेंट दिखाने के लिए डॉक्टर को मिलकर झूठा पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाया जाए, ये कॉन्स्पिरेसी था. दैट इज द स्टिंग ऑपरेशन. वन थिंग. सेकंड थिंग, आई विल पॉइंट आउट द क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ द केस, हाउ परमवीर सिंह इज इन्वॉल्व इन दिशा's केस एंड सुशांत सिंह राजपूत केस. जब इसमें मेनी मीडिया एंड मोर पर्टिकुलरली श्री अर्नब गोस्वामी, इन्होंने जब इस केस को उठाया, तब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने आ गए. दो लोग आए, एक थे डीसीपी विशाल ठाकुर और एक थे परमवीर सिंह. डीसीपी विशाल ठाकुर ने स्टेटमेंट दिया
कि दिशा सालियान का डेड बॉडी ये नेकेड था, उस पर कोई क्लॉथ नहीं था, ऐसी जो चर्चा चल रही है मीडिया में वो गलत है। क्योंकि जब उसका डेड बॉडी वहां नीचे गिरा था, वहां तुरंत पहुंच गए। दिशा सालियान के पिताजी पेरेंट्स वहां आए थे और उनके सामने पंचनामा हुआ। ये क्लियर झूठ बात है। इसका झूठ दो चीजों से साबित होता है। दिशा सालियान के पिताजी उसको जब हॉस्पिटल में ले गए तब पहुंचे थे और उनको ना उसका चेहरा दिखाया ना कुछ। आफ्टर 50 आवर्स 2 डेज के बाद आफ्टर पोस्टमार्टम उनको जब बॉडी दिया तब उनको पहली बार उसका चेहरा देखने मिला। तो ये सब झूठ है, वन थिंग। और ये डीसीपी विशाल ठाकुर का झूठ इज प्रूवन बाय द पुलिस ओन विटनेसेस। उनका सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है, उनको ये पता नहीं है कौन क्या कह रहा है और क्या नहीं है। दिस इज फर्स्ट थिंग। अब आते हैं मेन आरोपी इस केस के कवर अप के मिस्टर परमबीर सिंह। परमबीर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया और वो कहते हैं, 2 चीज बताना चाहते थे वो, कि हमने इस केस में पूरा सीसीटीवी और सब कुछ देख लिया है। जो मार्केट में कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है, उनका जो मीडिया कह रही है या रिपब्लिक कह रही है, उनका कहना था। तो ये चीजें गलत है। उसमें उस दिन वहां पर आदित्य ठाकरे नहीं था, ये पहला झूठ। और दूसरा, वो दिशा सालियान जो एक बार वहां गई ही है, वो बाहर आई नहीं है। वहां हमने देखा है कोई बाहर नहीं आया है। उसमें जो नीलेश ओझा जी, जब डेथ हुआ है तभी नीलेश ओझा जी, मिला है। नीलेश ओझा जी, मिस्टर परमबीर, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा, क्योंकि हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के भी एमएलए अमित साटम है। Mr. Satam, thank you very much for joining us on this broadcast. For all our viewers, in fact, it is Amit Satam who has been vociferously speaking about this entire matter. In fact, to his credit, Mr. Amit Satam has raised this entire issue in the Maharashtra Assembly because he believes that this is a case which ought to be spoken about. My name spelling, it is Amit Satam, S-A-T-A-M. Mr. Amit Satam, my apologies. We'll just get that corrected. I was just introducing you, as I was saying, that you, in fact, to your credit, you've been able to put the focus on this entire matter, something that perhaps there was no answer to for all this while. Mr. Satam, with every passing day, new questions are being asked. In fact, with us, we also have Mr. Nilesh Oja, who is the lawyer of Disha Salian. He has now turned the focus on what he says is a major cover-up, similar to what we had seen in the Mansukh Hiren case. And he believes that Mr. Parambir Singh has played a very important role in this cover-up. Mr. Amit Satam, I'm asking you this question because now you're in a responsible position. Do you believe that they do have a very important role and the former Mumbai Police Commissioner could have actually played the role of cover-up, helping the then Chief Minister, Mr. Uddhav Thackeray? See, it is quite clear that the police at that point of time has tried to cover up this entire incident. It is quite clear. Without the police help, this entire incident cannot be covered up. A murder cannot be portrayed as a suicide without the help of the police. The senior PI of the Malvani Police Station at that point of time is a very, very important witness according to me as far as this entire case is concerned. Also, the DCP of that particular zone should be called for questioning. Now, whether the Mumbai CP was involved in this, whether the Mumbai CP was not involved in this, is a matter of investigation. Whether the lower rank officers acted on instructions from the top rank officers or they acted directly from the instructions of their political is something which is a matter of investigation. And hence, as I have already said earlier, all those people who have been named by Disha Salian's father should be called for questioning, should be called for investigation. If required, there should be custodial investigation, and the senior PI of Malvani Police Station and the DCP of that zone at that point of time should be called for investigation.
depending upon the statements made by the senior PI of Malvani Police Station and the DCP of that zone, it will be clear whether they had got instructions from their department bosses or they had got instructions directly from their political bosses at that point of time, which will be clear only after the statements of senior PI of Malvani Police Station and DCP of that zone. Well, in fact, Mr. Satam, I just request you to stay on with us because we're getting in some more breaking news right now. This is the content of the letter that has been submitted to the Malvani Police Station, if I'm not wrong. In fact, these are details that are now emerging of what has now been asked. Mr. Nilesh Oja is also with us. This is what Disha's father is saying. Police is deliberately withholding proof. CCTV, forensic reports, all have been withheld so far. Mr. Nilesh Oja just pointed out right now that it is the right of the family members that they should be provided with all the details. So they're not really providing any details. And that smacks of some sort of a conspiracy. Mr. Satam, more reports now coming in that the Malvani Police Station was hesitant to provide any report, and they haven't even submitted a report before the additional magistrate on this entire issue. So doesn't that indicate that there's something really wrong? It is very, very clear that Malvani Police Station has a role to play in this cover-up. The senior PI of Malvani Police Station and investigating officer at that point of time are definitely involved in this cover-up. But whether this cover-up they have done instructions from the top-rung officers of their department or whether directly from the political bosses is a matter of investigation, which will only be clear after they investigate. And hence, in addition to the people named by Disha Salian, the first person who should be called for investigation is the then senior PI of Malvani Police Station. Mr. Satam, we'll just try and perhaps fix your audio line. I'll quickly do that because I do have very important questions to also ask you. So we'll try and, our team will try and fix this. It's important that we have you on air. It's a big breaking news coming in, big development taking place in the Disha Salian case. Mr. Oja, आपके पास वापस आना चाहूँगा इस वक्त. अमित साटम भी ये मांग कर रहे हैं कि इस पर जांच होनी चाहिए. जितने भी ऑफिसर्स थे उनका रोल देखना चाहिए. मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे थे और वो इंस्ट्रक्शंस सीएम के ऑफिस से लेकर मुंबई पुलिस कमिश्नर से लेकर मालवानी पुलिस स्टेशन तक पहुंच रही थी? क्योंकि आज नारायण राणे भी कह रहे थे कि उद्धव ठाकरे जो उस समय के मुख्यमंत्री थे उन्होंने कॉल किया और वो उन्होंने कहा कि देखिए आपका भी बेटा है, हमारा भी बेटा है, आप किसी का नाम मत लीजिए. क्या आप इसे एक तरह से प्रूफ मानते हैं कि कुछ गड़बड़ है? कुछ नहीं, बहुत कुछ गड़बड़ है. हमारे इसमें हमने स्पेसिफिक आरोपी बनाया उद्धव ठाकरे. उद्धव ठाकरे इज अक्यूज्ड इन आवर केस. वन थिंग. दूसरी चीज, परमवीर सिंह तो डायरेक्टली इन्वॉल्व है इसमें और उस पर जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का एक जजमेंट है कि व्हेन यू टेक क्रेडिट कि अगर कोई किसी पुलिस ने कुछ किया तो मेरे लीडरशिप में व्हेन आई वाज कमिश्नर पुलिस हैव डन दिस थिंग, देन अगर कुछ क्राइम होता है तो कमिश्नर इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल. और 1 करोड़ रुपीज कॉम्पेंसेशन देने को कहा गया था. प्रोसिक्यूशन ऑर्डर किया है ऐसे कमिश्नर लेवल के अधिकारियों का. तो ये कमिश्नर को छूट नहीं है और इसमें तो इनका एक्टिव रोल है. देखिए, एक्ट ऑफ ओमिशन इज आल्सो ब्रेकिंग न्यूज. बट इट इज नीलेश जी, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, इस पर बहुत रिएक्शंस आने लग गए. आदित्य ठाकरे देखिए अब तक कोई जवाब नहीं देना चाह रहे हैं. इनफैक्ट आदित्य ठाकरे, व्हेन आवर रिपोर्टर आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन, was trying to belittle him. In fact, this is what has happened when a question was actually asked to Aditya Thackeray. Listen. केंद्रीय मंत्री नारायण राणे लगातार मंत्री है क्या? निकाल सांगितलं की उद्धवजींनी फोन केला मला. बघा, कचऱ्यावर आपण लक्ष देतच नाही. काल पण सांगितलेलं. कोरटकर प्रकरणामध्ये जर आपण बघितलं तर ते बाहेर गेलं असल्याचं म्हटलं जात आहे, पण पासपोर्ट आता त्यांच्या पत्नीनं दिलेला आहे आणि तुम्हाला हे परत सांगतो, अबू आझमीचा विषय असेल, औरंगजेबचा असेल, मी असेल, सगळे हे जे काही काढतात ना,
ते कोण कराड, अक्का कोण आहे, कोरटकर, सोलापूरकर, कोश्यारी हे सगळे लपवायला करत आहे. जेव्हा सरकारी पद्धत अपयशी ठरते किंवा सरकार अपयशी असतं, काही अकार्यक्षम मंत्री त्यांच्या सोबत असतात आणि खात्यातून काम होत नाही, तेव्हा मग काय करायचं, तर कॉन्ट्रोवर्सी करायची म्हणजे बाकीचे महत्त्वाचे विषय लपतील. आज आपण पाहतोय सीबीएसईचा They are now basically bringing in a former minister to try and deflect issues. In fact, the Aurangzeb matter and there are several other matters that have been brought in, but this is just a way to try and defame others, and this is an effort that has been made by the government to distract the people. नीलेश ओझा जी, आपने देखा कि आदित्य ठाकरे को वापस ये सवाल किया गया है. वो कह रहे हैं कि क्या वो मंत्री भी हैं, और दूसरी बात वो कहते हैं कि इसे डाइवर्ट करने के लिए ये डिस्ट्रैक्शन है, ये कहा जा रहा है. कल भी ये सवाल उठाया गया था. लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार जब आप आदित्य ठाकरे के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, एक आरोप लगा रहे हैं, आपके पास किस तरह की एविडेंस है और आप क्या जानना चाहते हैं आदित्य ठाकरे के साथ, क्योंकि वो कह रहे थे हम तो उस समय वहां पे थे भी नहीं. मैं वहां था नहीं, ये उन्होंने ऐसा नहीं कहा. पहले उन्होंने डिफेंस किया था कि मैं वहां नहीं था, मेरे नाना जी का डेथ हो गया था, माधव पाटनकर जी का, तो मैं वहां था. वो बात झूठी निकली और एक्चुअली उनके नाना जी का डेथ 15 जून को हुआ था. उसके बाद में हमने तो क्लियर कहा है, और समीर वानखेड़े जी का एफिडेविट आ रहा है अभी हाई कोर्ट में विथ ऑल द मोबाइल टावर लोकेशन एंड ऑल डिजिटल फुटप्रिंट्स, और आई विटनेस है वहां पर. आज नारायण राणे जी ने आज भी रिपीट किया है, और सब जाने दीजिए, उद्धव ठाकरे गुट के इनके ही प्रवक्ता किशोर तिवारी जी ने एडमिट किया है कि वहां पर 8 जून को जिस दिन दिशा की डेथ हुई, आदित्य ठाकरे वहां थे, और मैंने खुद हमारे सोर्सेज यूज करके पुलिस को मैनेज करके इनको बचाया, नहीं तो ये जेल में जाते. तो ये इस बात पे वो जवाब दे. इसके ऊपर मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि तू इधर उधर की बात न कर, ये बता काफिला कैसे लूटा. हमें राहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है. तो ही मस्ट टेल कि जो हम कह रहे हैं वो गलत है क्या. अगर उनको लगता है ये गलत है तो दे कैन फाइल डिफामेशन केस अगेंस्ट अस, दे कैन फाइल परजुरी पिटीशन अगेंस्ट अस, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहे. हमने लीगल नोटिस दिया है उनको. सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन ने इनके ऊपर 19,750 करोड़ रुपए का लीगल नोटिस सर्व किया है. उनको मिल चुका है एडवोकेट का नोटिस. 1.5 साल से जवाब नहीं दे पा रहे हैं. हमारे पास इस वक्त नीलेश जी, मैं माफी मांगना चाहूंगा आपसे क्योंकि हमारे पास वक्त कम है, इसलिए एक और सवाल करना चाहूंगा अमित साटम से भी, और क्योंकि ये लगातार हम कवरेज करते आ रहे. मिस्टर साटम, with regards to the way forward, the entire hope right now is on Devendra Fadnavis-led government in the state of Maharashtra. And I can tell you the number of people who have been connecting with us and the kind of response that we have got from people who have been closely following Disha Salian's case and Sushant Singh Rajput's case. They're all asking us to ask this question to Devendra Fadnavis's government, that what are you doing? How long will you take? When will you give us the answers? Because at the end of the day, beyond this kind of a political back and forth that is actually taking place, Mr. Satam, everyone is spinning the hope that finally the government will take this seriously and they will answer. So for all the people who have been asking this to us for the years, over the last few years, I want you to answer to them that what is it that your government is promising? The government has already made it clear on the floor of the House that the investigations are on and that the findings on the investigation report of that this particular case will be brought in front of the public as early as possible. Also, the government has made it very, very clear that now, since a petition has already been filed in the court, and I think it is listed for 2nd of April, we will follow whatever instructions the Honorable in this particular matter. We are committed to justice. We are committed to the due process of law. We will ensure that no person will be protected, and we will also ensure that no person is victimized also.
And hence, we are for a free and fair investigation and justice as far as this matter is concerned. Well, thank you very and much. As far as the government is concerned. Well, thank you very much, Mr. Amit Satam and Mr. Nilesh Ojha, for joining us on this broadcast, a story that we'll be relentlessly following to find out the answers.